Hello students, today is the 5th class for electrostatic. तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. The charges are distributed in two ways. What is the distinct or the continuous? Clear? तो डिस्टेंस काली पढ़े थे नेक्स्ट क्लास रे जाइतिला. आज देखा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हला. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन continuous charge distribution. Clear? The discrete कहते तो suppose this is a charge, this is charge here and there. These are the discrete charges, and the total charge can be found out by the summation. I is equal to Q. Total charge Q is equal to QI, where I is equal to 1 to n. तो आज देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्जेस है. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक रहा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. देन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज distribution, and third one is the volume charge distribution. Volume charge distribution. Clear? तो आम गोटे पर गोटे जीवा. तो प्रथम देखा लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन. व्हाट डू यू मीन बाय लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? Linear means one dimensional by in a straight line. If the charges are distributed, linear charge distribution, charge distribution. In a linear charge distribution, the charges are distributed either uniformly or non-uniformly in a line, that is the length of a wire. In linear charge distribution, charges are distributed. The charges are distributed uniformly or non-uniformly. In a wire, by along the length of a wire. In a wire. तो जदि ये गोटे वायर है, सपोज दिस इज ए वायर, तो ये कौन है द चार्जेस आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ए टू बी. दिस इज द सेक्शन ऑफ ए वायर. द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ए टू बी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर. दिस इज नोन एज द लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपको कहीपर वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ कहीपर एलोंग द लेंथ ऑफ द वायर ताको आम कौन कह लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दिस चार्ज सपोज आधर मन कर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर. कौन कही आइदर यूनिफॉर्मली हो पारे नचेत नॉन यूनिफॉर्मली हो पारे. क्लियर? तो से जाओ यूनिफॉर्मली हो कि नॉन यूनिफॉर्मली हो. If the charges are distributed along the length of a wire, that is known as the linear charge distribution. And आम ये बाहर करिए कौन. सपोज द क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द टोटल लेंथ ऑफ द वायर.
ताले हमें कौन बाहर करिवा लिनियर चार्ज डेंसिटी linear charge density that means the charge distributed per unit length. It is the charge distributed per unit length हला पर यूनिट लेंथ रे केते चार्ज रहला सेटा कला लिनियर चार्ज डेंसिटी. it is denoted by lambda. it is denoted by Greek letter lambda. clear? तो बर्तन देखिए lambda टा तल केते. तो what is the value of lambda? Suppose this is the wire AB. clear? So how can you find out the lambda? The lambda is a linear charge distribution ray. But if the charges are distributed in a length, then the charge per unit length is known as the lambda by linear charge density. So first देखिए if the charges are uniformly distributed, जदि चार्ज टा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन हम for uniform distribution जदि charges are uniformly distributed throughout the length तो लंबड़ा कितना हो तले if q be the charge distributed in a length L. है condition is called uniformly distribution. If the Q be the total amount of charge distributed in the length L, then by definition lambda is nothing but that is the charge per unit length. Lambda is equal to Q by L. Lambda la linear charge density, that is the charge distributed per unit length. Hala? This is lambda is equal to Q by L. So how can you find out the total charge? Yes, total charge can be kete gala lambda into L. Total charge है लगते lambda into L. Total charge in the wire A to B. अब इधर total charge कितना रहला lambda into L. Clear? Next. देखिए हमें B रे non uniform distribution charge. B for non uniform distribution. For non uniform distribution. Clear? For non uniform distribution कौन होगा देखो तले non uniform distribution माने what do you mean by non uniform? The charges are not distributed each and every point, each and every place, each and every length are same. एठी जति की चार्ज एठी सेति नो एठी सेति नो एठी सेति नो एठी सेति नो. This is known as the non uniform. The charges are distributed from A to B continuously, but each and everywhere the charges are not same. This is known as the non uniform distribution. Then how can you find out the lambda? Na charge per unit length जेहेतु एठी कोन अछि the charges are not same throughout the length, we consider elementary length. सबुळे मन रखिबो non uniform बेले आमे सबुळे गोटे छोट जिंस नबा elementary length. This is your elementary length of the conductor. Clear? एटा हला के ना delta L. जदि टोटल लेंथ हला L, टोटल चार्ज हला Q, ताले डेल्टा L रे केते चार्ज स्मॉल चार्ज, ताले दिस चार्ज हला केते ना dq. Clear? And the length is so small that the charge is said to be uniform through this length. Clear? आमे गोटे छोट एलिमेंट नेले जहार लेंथ होची dl. dl means you imagine dl is a very small, not this is the length dl.
For our convenience, we consider this is the length dl geometrically, but this is not length dl. It has some length. dl is a very small as possible as. तेणु जदि एठी very small length हला, the charge in this surface, in this length, charge in this length is uniform. तो जदि uniform charge, ताले हमें कौन कहचे? Charge per unit length is के lambda. तो एठी बर्तन जदि dq is distributed uniformly through the length dl, तो what is the lambda? The lambda is equal to dq by dl. हला? ताले if we consider a small element, if dq be the charge distributed, हला, in a small length, in a small, but in an elementary length, जा लिख पा रहा, in a small length लिख पा रहा, but in an elementary length, in an elementary length dl, हला, तो लंबड़ा कहते हैं जो, तो लंबड़ा is equal to charge by length, हला, तो लंबड़ा is equal to charge by length, clear? तो lambda is equal to dq by dl, हला? तो if lambda is equal to dq by dl, तो what is the total charge from A to B? कारण सब आड़े समान charge नहीं, A to B भितरे, तो how can you find out the total charge? तो एठी कौन थिला? जेहेतु सब आड़े समान charge थिला, तो हमें कौन कहले? Charge per unit length into total length बाहर वाला charge, किंतु एठी केमिति बाहर करिवा? तो एठी सबु जगह रे uniform distribution नुह, तो हमें केमिति बाहर करिवा? तला बर्तन केते गला देखो, तल दिस इज इक्वल टू, तले dq केते? dq is equal to lambda into dl, clear? dq is equal to lambda into dl. If dq is equal to lambda into dl, then how can you find out the total charge over the length l? तल केन बार करिबा ना बाय इंटीग्रेशन. सबले मन रखो, मो जेते डेफिनाइट सेते बेले summation, this is the summation for a definite numbers, for indefinite integration, हला? बर्तन एटा कोन केमिति जानिला मे indefinite ना, जेहेतु dl is very small, तले how many number of dls are there? How many number of dls are there from A to B? केतेटा dl अछि? How many number of dls? If dl is very small, तले numbers from A to B is very large. तेणु very large, तो प्रत्येक रे में बाहर करिए कोन? फर्स्ट डीएल पई केते चार्ज, सेकंड डीएल पई के, जेहेतु चार्जेस आर नॉट यूनिफॉर्म, तेणु ए आधे केते चार्ज, आधे केते चार्ज, आधे केते चार्ज, हमें एई भଳି भाबरे सब गुडी कर चार्ज को मिसई बाहर करिवा. कारण चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी, दे कैन बी सिंपल एडेड बाय अलजेब्रिक रूल. हला मु कोन कहितली? So there कौन कहतिला? additive charge nature रे कौन कहतिला? The charge of an extended body is equal to algebraic sum of the charges at different parts of the body. Suppose this is an extended body AB, ताले total charge किन बाहर करिवा ना? At the different parts, ताले एठी केते सबु तिरा यदि मिसे जिवा, हमें total charge पाइबा, हला? ताले किमिति मिसेबा? dq बमने करे ताले dq1 dq2 dq3 like that. That is the integration process. Clear? If there are finite numbers, we use the summation to get the result, and if there are infinite numbers, we get the integration. The integration of a dq is equal to integration of a lambda into dl. Integrate both sides. The integration of dq, that is equal to q, and this is equal to integration of lambda into dl. Clear? So what is the dl? हमें कौन करिए? इंटीग्रेट फ्रॉम A to B. Suppose this is the total length 0 to L, that is called 0 to L. Integrate from 0 to L, that is called lambda dl. किंबा आपको एमती लिखा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ lambda dl
এটা হলো L. This indicates the line integration. তাহলে এই যে সিম্বল, এই সিম্বলটা কাজ যায় লাইন ইন্টিগ্রেশন, হ্যাঁ, the integration throughout the length of the wire, এটা গেল লাইন ইন্টিগ্রেশন. This is the line integration. Line integration. Integration of the wire throughout its length, that is known as the line integration. অর্থাৎ 0 to total length of the wire বা total length of the conductor. হ্যাঁ, তাহলে if there is a uniform, then we can find out Q is equal to lambda into L. If it is non-uniform, then we find out the total charge in the wire is equal Q is equal to line integration of lambda into dl. Clear? The lambda is a constant. It is does not depends upon the Q and dl. This is depends upon the nature of the material. But देखिए dl, তাহলে units of lambda. Next one देखिए unit of lambda. তাহলে what is the unit of lambda? Yes, lambda is equal to केते कहले dq by dl लिख परिबा नचेत q by l, हैला. तो lambda is equal to केते लिखले हम लिख परिबा q by l लिख परिबा नचेत और नॉन इनफॉर्म पे कोन कहले dq by dl जा लिख पार. তাহলে यूनिट कौन, তাহলে in SI हैला. Q means charge, coulomb. Length means meter, एटाई वजह से dq means very small charge, that is equal to coulomb. dl means small length, that is a meter. तेणु c by m हैला. तेणु SI यूनिट हैला के coulomb per meter. Next we find the dimension. Dimensions same thing. The lambda dimension, dimensional formula of lambda is equal to कहते हैं Q by L. What is Q? The you know Q is equal to IT. Q is equal to I into T. कारण I is equal to Q by T तमे पूर्व जानी चा हाई स्कूल लेवल रे पढ़ी चा एवं करेंट आमे जेतरा सेतरा पढ़ीबा जेहेतु आमे वर्तमान सुधा करेंट को जाइनो तो हाई स्कूल लेवल जानी थिवो I is equal to Q by T. ताले Q is equal to केते हला IT. ताले Q is equal to I into T हला. ताले that is equal to हला Q by L, length, dimensional formula of length. ताले टी केते हला I रो, yes के कोबरे I रो dimensional formula. I is a fundamental quantity. ताले A T हला time divided by L. This is the dimensional formula. We can write in a order, that is equal to m0 L minus 1 T1 A1 हैला. This is m0 L minus 1 T1 A1. तो this is your dimensional formula of कहारो चार कोजी तुम्हारा lambda linear charge density. Clear? तले m0 L minus 1 T1 A1 Q by T, Q by L, Q by L. Next one जीवा ये ला तमरा linear charge density. तो next how can this charge distribution नहीं परिवा ना on a surface charge can be distributed on a surface हैला. तब कहते हैं surface charge distribution. Surface charge distribution. Surface charge distribution. Yes. Surface charge distribution. What do you mean by surface charge distribution? Say suppose this is a surface area. Surface means area. Suppose the charge is given to this continuously, uniformly distributed throughout the area. This is known as surface charge distribution. So in surface charge distribution, in surface charge distribution, in surface charge distribution, कौन होगा? Charges are distributed. Charges are distributed
charges are distributed uniformly or non-uniformly, uniformly or non-uniformly, yes, uniformly or non-uniformly. Okay, on a surface. So in the wire, it is on the surface of a metal sheet, of a metal sheet, है of a metal sheet বা sheet যা লিখবে है of a sheet, conducting sheet हो, metal sheet, whatever may be, of a on the surface of a sheet है তাহলে বর্তমানে আমি যদি sheet, what do you mean by sheet? sheet মানে কোন রে sheet কাহ কইবা আমি sheet সে কইছি গোটে sheet রে surface রে যদি চার্জ ইউনিফর্মলি বা নন ইউনিফর্মলি রহিলা তাহলে সেটাকে আমি কোন কইবা surface charge distribution বলি কইবা charges are distributed on the surface of a sheet either uniformly or non-uniformly. What do you mean by sheet? sheet কোন bed sheet, paper sheet মানে কোন aluminum sheet, iron sheet মানে কোন sheet মানে jar length or breadth achi, length breadth achi, but the thickness is very 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 small as compared to the length and breadth, that is known as a sheet. Hala suppose this is hala ame ko kaiba this is a mone kara eta ote bed sheet hala this is a bed sheet, it has kon ache length breadth achi but thickness is very small, it has some thickness hala thickness is very small as compared to the other two dimensions length and breadth. Clear? आपको कहा गया surface charge distribution बाकू कहा जाए two dimensional distribution of charge, two dimensional और third dimensional is neglected. Clear? ହେଲା ତାହେଲେ এটা ଗୋଟେ surface তাহলে বর্তমান দেখিবা তাহলে আর যদি এটা ধরে চার্জ আর ডিস্ট্রিবিউটেড ইউনিফর্মলি হো কি নন ইউনিফর্মলি হো তাহলে पर यूनिट एरिया रे केते चार्ज रहिला ताको हमें कोन कहबा सरफेस चार्ज डेंसिटी हैला द चार्जेस आर डिस्ट्रिब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. देखिबा हमें नेक्स्ट टाइम देखिबा सरफेस चार्ज डेंसिटी. Next है surface charge density, surface charge density, surface charge density. What do you mean by surface charge density? Hello? So it is the charge distributed per unit area of the surface. It is the charge distributed. It is the charge distributed per unit area of the surface of the sheet. Unit area of the surface of the sheet. Of the sheet. Clear? তাহলে কোন কইতিলি suppose this is a এটা একটা sheet হলা this is the charge which is distributed throughout the surface তাহলে per unit area suppose we consider this area তাহলে how much charge is there তাহলে this is known as the surface charge density তাহলে this এটা হলো মনে করো এটা unit area তাহলে आ धियरे केते चार्ज रहिला that is known as the surface charge. It is the charge distributed per unit area of the surface of the sheet. It is denoted by Greek letter. Denoted by hela kon kayako sigma. This is the sigma symbol ala sigma eta. It is denoted by sigma. Clear? তাহলে বর্তমান দেখিবা সিগমা व्हाट इज द सिग्मा আর ভ্যালু কেতে সিগমা কেতে হাউ ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট দ সিগমা না প্রথমে দেখিবা যদি এটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউশন আছে তাহলে व्हाट इज द সিগমা এবং যদি নন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন আছে তাহলে व्हाट इज সিগমা তাহলে বর্তমান দেখিবা
एक रहला फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन if the charges are distributed uniformly अर्थात ये जो चार्ज ऑन द सरफेस सब आड़े समान भाव में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी प्रत्येक जगह समान चार्ज रही ताले आम केमती बाहर करवा ताले फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ताले if q be the charge distributed if q be the total charge distributed केमती uniformly on the surface area you can write a or s जा लिख पार suppose q charge distributed on the surface area a ला a ताले how can you find out ताले sigma is equal to q by a sigma is equal to कितना गला q by a charge per unit area ताले that implies तबे how can you find out the total charge on the surface ताले surface रे total charge ताले केते होबो जदि आमे देखो total charge आमे total surface दिले unit area रे बाहर करि परिबा unit area रे जदि अछि ताले total surface रे मध्ये बाहर करि परिबा ताले total charge केते गला surface charge per unit area into total area of the surface yes sigma is equal to qa और sigma is equal to qs मध्ये निया जाए surface हला आगो हमें a और s मध्ये लिख परिबो s surface area either a denote करि परिबो नले s हला एठी s अछि एठी भी a अछि तमे जोटा डिनोट करि पारो s करि पारो नचेत a करि पारो जदि एठी a नबो सिग्मा a नबो नचेत सिग्मा s you should not write 2 केवल दीटा सिंबल लिखिया दरकार नाही जहां लिखिबो गोटे सिंबल क्लियर तले एटा हेगला q is equal to sigma a और sigma s क्लियर एबे देखिबा फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जदि नॉन यूनिफॉर्म थिबो ताले केमित बाहर करबा सेकंड हला फॉर non uniform distribution hela for non uniform distribution how can you find out the charge how can you find out the sigma sigma केमते sigma बाहर करिवा for non uniform distribution same dim को कहथिली if the charges are distributed over the surface non uniform what do you mean by non uniform तो एठी जति चार्ज एठी से 3 हो एठी से 3 हो एठी से 3 हो तर सब जगह रे द चार्ज परिमाण माने कर कम बेसी एमति हे कि रहि छी दिस इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म हला तले नॉन यूनिफॉर्म थिले आमे केमिति बाहर करिबा now we consider an elementary area suppose this area कहते हैं let it be dA or ds हला और आप लिख परिबा ds dA और ds क्लियर तले हमें प्रथमे ए एरिया रे नबा आधे चार्ज केते रहला ताले dq जेतु एरिया इज वेरी स्मॉल चार्ज इज वेरी स्मॉल तले सिग्मा केता होबो तले if dq be the charge distributed hela distributed कोठी now on the area of dA on an elementary something elementary माने very small elementary area केता नबा dA नहीं पारो और ds मध्य नहीं पारो जा नहीं पारो तले इन स्मॉल एरिया ds चार्ज केते रहला dq तले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा हमें सिग्मा केते पाइछे चार्ज बाय एरिया तले इट चार्ज केते ना dq एरिया केते ना da बाय ds तले वर्तन सिग्मा केते गला तले सिग्मा इज इक्वल टू
sigma is equal to yes total charge on this area रे total charge कहते हैं ना dq by area कहते हैं ना dA or you can write dq by ds. You consider one symbol dA or ds. Clear? So what about dq? Now find dq is equal to कहते गला ताले sigma into ds or dA. dq is equal to sigma into ds. Clear? ताले dq कोठी on this surface यही surface रे charge. ताले what is the total surface रे charge कहते जेहेतु charges are non uniform तेणु आमको कौन करिया पड़िबो सबु सरफेस बर्तमान आको सब भांगी दवा यू डिवाइड इनटू नंबर ऑफ सरफेस we divide into number of surface हला they are the ds we divide into a large number of such elementary area एवं प्रत्येक एरिया रे केते केते चार्ज अछि बाहर करो सपोज ए एरिया ला ds1 आधर ला dq1 एरिया रे ला dq2 आधर माने कर ds2 तो सब गुडी को मिसै देले हमें टोटल चार्ज पाई जिबा हैला तले एठी कोन कहली जेहेतु ds is very small elementary area then the whole area is divided into large number of such elementary area तो टोटल चार्ज कते गला ना इंटीग्रेशन dq is equal to sigma ds हैला तले एठी कोन करिबा टोटल सरफेस 0 to total surface area माने करा s तल this can be written as q is equal to s sigma ds तळे लिखि देली s 0 to s किंबा तळे लिखि देली s आम अर्थ जहा आ अर्थ सेया एटा कोन का जाय सरफेस इंटीग्रेशन ए जो सिंबल दिस सिंबल आ का जाय सरफेस इंटीग्रेशन integrate the total surface integration clear so in this way we can find out the total charge on a surface if the charges are non uniformly distributed if the charges are uniformly distributed simple we can find out the total charge that is the charge per unit area into total surface area जेहेतु charges are uniform clear तो एबे देखिबा what is the unit and dimension of a surface charge density what is the unit and the dimension of a surface charge density yes the units and dimension of surface charge density unit हला तले what is the unit surface charge density unit कोन हो tell me तले sigma is equal केते लिखिबा q by s or a or we can write dq by ds or da हला तले वर्तमान यूनिट कोन हो तले हेलो तले ने एसआई हेलो हाँ मु गला लेट हो 5:20 पाखा गई 5:20 5:30 हाँ 5:20 5:30 मु क्लास रे अछि हला सर के हाँ तले वर्तमान इन एसआई तले एसआई रे कोन होबो सिग्मा इज इक्वल टू q by s q that is the coulomb s area meter square coulomb by meter square clear tale in SI the unit is coulomb by meter square by coulomb per meter squares next dimensions tale how can you find out the dimensions similar manner sigma is equal to kete rela q eta la ki s q la ki it हला q का मैं लिख परिबा current into time divided by s हला
What is the dimension of a current? The current is a fundamental quantity having dimension kete na a t s means area la kon dimension l square tar dimension kon hegala we can arrange them in a order mlt hala tar kete hegala eta m0 hello L2 hello हाँ कौन हाँ से +3 करूँ है हाँ ताले M0 L2 T1 नेक्स्ट आसला A1 क्लियर ताले कौन पाइले M0 सॉरी L-2 मीटर स्क्वायर L-2 है L-2 केते रहला T1 A1 क्लियर है ताले एठी M नहीं ताले M0 L ऊपर गला L-2 MLT T1 A1 क्लियर दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला of kaharo surface charge density clear next तो एई छोटे कथा मने रखिबो द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हला देखो बड़े बड़े क्वेश्चन आसे सपोज हमें सिग्मा केते नेले सिग्मा इज इक्वल टू q by s क्लियर सिग्मा इज इक्वल टू q by s by q by a टोटल चार्ज by टोटल एरिया क्लियर सपोज आमे कौन करिबा चार्ज आउ एरिया सरफेस एरिया जदि सरफेस एरिया में बढ़े दबा तले एटा कोन हो सपोज सरफेस एरिया इज लार्ज तले कोन हेगला डेंसिटी कमी जिवो देखो समान चार्ज आमे सरफेस एरिया को बढ़े दबा तले कोन बेटा कमी जिवो हला चार्ज कांस्टेंट जदि आमे एटा को बढ़े दबा एटा को वर्तमान माने कर बढ़े देले एटा को बढ़े देले ताले कोन बेटा एटा कमी जिवो हला एटा बढ़े देले एटा सॉरी बोल लिखली एटा बढ़े देले एटा कोन हेगला सरफेस एरिया को जदि बढ़े देबी ताले ये कोन हला कमी गला ठीक तले नेक्स्ट आको जदि हमें सरफेस एरिया कोन करिवा कमेबा सरफेस एरिया जदि कमेली ताले कोन बेटा एटा बढ़ी जिवो देखो केमती चार्ज इज कांस्टेंट सपोज एटा ओटे सरफेस माने करो एटा ओटे मैट पड़ी छे MAT मैट हला एटा ओटे मैट पड़ी छे हला तो बर्तन आम कौन करागला है मन कर आ भितर 50 स्टूडेंट्स आर देयर 50 स्टूडेंट्स यस 50 स्टूडेंट्स आर देयर दिस लाइक दैट है 50 स्टूडेंट्स आर देयर लाइक दैट है बा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सपोज मैं लिखली 13 स्टूडेंट्स आर देयर यस तले मैटर रहले 13 स्टूडेंट्स आमे कोन करबा सही 13 स्टूडेंट्स रखिबा किंतु मैट बढ़े दवा साइज रो मैट बढ़े दवा सपोज द मैट साइज इज लार्ज एंड लार्ज आमे ओटे मैट साइज न सही सेति की पिला तले कोन होबे तले देयर डेंसिटी कौन है कमी गला ताले एठी कौन हम ये डेंसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइक दैट ताले एठी सेमान का भितरे जति की गैप थिला एठी कौन है गैप बढ़ी गला ताले पर यूनिट एरिया रे एठी जति की पिला रहिबे पर यूनिट एरिया रे सेति की पिला रहिबे नहीं त माने ए जगह रे कौन हो डेंसिटी कमी गला एठी डेंसिटी बढ़ी गला मने कर एठी 13 जण पिला छथि यस मने कर आउ माने 15 जण पिला धेर पकेबा आउ 15 जण पिला कहबा जाकी बस सही मैट सेति मैट तल कोन हो आउरी तांका भीतर गैप आउरी कमी जिवो त माने डेंसिटी बढ़ी गला जेते गैप कमीबो सेते कोन हो डेंसिटी बढ़ीबो कारण पर यूनिट एरिया रे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर क्लियर ताले आमे एठी कोन पाइले जेते सरफेस एरिया कमीबो सेते डेंसिटी बढ़ीबो सरफेस एरिया बढ़िले डेंसिटी कमियो प्रोवाइडेड चार्ज इज कांस्टेंट
क्लियर तले एठा में कोन पाइले हला इफ द चार्ज इज कांस्टेंट तले सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया हला larger the surface area smaller the density smaller the surface area larger is the density clear आमे लिख परिबा that implies smaller the surface area smaller the surface area yes smaller the surface area कोन हबो large is the surface density large is the surface density clear बुझेला ना नहीं जते आमे सरफेस एरिया कमेइबा सेते डेंसिटी बढ़िबो एवं सरफेस एरिया जते बढ़ेइबा सेते डेंसिटी कमी जिवो दिस इज प्रोवाइडेड चार्ज इज कांस्टेंट हला समान चार्ज यदि आमे दुईटा सरफेस दबा गोटे छोट सरफेस और गोटे बड़ सरफेस ताले छोट सरफेस रे डेंसिटी अधिका रहइबो एवं बड़ सरफेस रे डेंसिटी कम रहइबो क्लियर ताले एठो आमे गोटे छोट क्वेश्चन रे देखिबा ताले जोठे सरफेस एरिया कम सेठी कोन डेंसिटी अधिका हला सपोज दिस इज मने करो एटा tell this is a suppose this is the surface hala tell where is the surface density is more where is the surface density is more suppose this is an area where is the surface density is more suppose this is an area where the surface density is more hala tell कोठी surface density अधिका आमे समान चार्ज सबुथिरे दबा सरफेस डेंसिटी को जगह रे बढ़ी जिवो एट द पॉइंट सपोज वी कंसीडर दिस रीजन ए जगह रे जदि आमे नबा गुटे पॉइंट तले कोन बेटी सरफेस डेंसिटी अधिका ऑन द फ्लैट सरफेस आमे दि फ्लैट सरफेस रे नबा ए जगह रे सरफेस एरिया कोन हबो सरफेस डेंसिटी कमी जिवो हैला तले एठी आमे लिखिबा एट द कर्नर रे कोन ले सरफेस एरिया कम एट द कर्नर हला तले कोन हबो द सरफेस डेंसिटी is larger than कोठी the flat surface हला फ्लैट सरफेस कॉर्नर रे अपेक्षा फ्लैट सरफेस जोडी नियो एठी नियो व्हाटएवर नेबी फ्लैट सरफेस रे कोन हबो सरफेस चार्ज डेंसिटी अधिक एट द कॉर्नर तेनो सब बेले पई एट द पॉइंट टिप त माने ठीक कोठी एट दिस पॉइंट एट द पॉइंट कॉर्नर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज larger than that of the flat surface तले आमे देखिले जगह रे सेकंड देखिबा सपोज इन केस ऑफ ए सर्कुलर शेप तले एठी कोठी सरफेस डेंसिटी अधिका कोठी कम यस टेल मी जदि इफ इट इज ए spherical in shape तले व्हाट इज द सरफेस डेंसिटी वेयर इज द सरफेस डेंसिटी इज मोर तले को जगह रे सरफेस डेंसिटी अधिका हबो ना बर्तन देखो वेयर इज ए पॉइंट कॉर्नर पॉइंट काई इज देयर एनी कॉर्नर पॉइंट इन ए स्फेरिकल बाय डाउट ए स्फीयर बाय डाउट ए सर्कल कोइ परिया सर्कुलर एरिया कोइ परिया सरफेस हला दिस इज ए सर्कुलर शेप डिस्क तले वेयर इज द कॉर्नर पॉइंट देयर इज नो कॉर्नर पॉइंट देयर इज ए कॉर्नर पॉइंट बट हियर there is no corner point. So in a circular surface surface charge density is same everywhere. Clear? तले हम लिखिबा in a circular surface
in a circular surface. Surface charge density is uniform. Hala? Surface charge density. Surface charge density is same. Is same everywhere. Everywhere. Is same everywhere. Surface charge density is the same everywhere because there is no any corner point. Corner point रे surface area कम तेणु surface charge density अधिक हम किंतु there is no any corner point. तेणु गोटे council question अच्छी हला where the charges are but where the surface charge density is more in a pear shaped body हला that is a council question. In a pear-shaped body where the surface charge density is more, look at diagrammatically. This is the council question. Where the surface charge density, where the surface charge density is more, where the surface charge density is more in a pear-shaped body, in a pear-shaped body. So it in diagram, but show it in a diagram. Show it in, but show it diagrammatically. Show it diagrammatically. हला से कहि छी गुटे पेयर शेप्ड बॉडी अछि तेबे तार कोठी सरफेस चार्ज डेंसिटी अधिका हबो एवं ताकु चित्र माध्यम रे देखो. दिस इज ए काउंसिल क्वेश्चन. तले बर्तन पेयर शेप्ड, व्हाट डू यू मीन बाय पेयर शेप्ड? पेयर शेप्ड हला मुनिया वस्तु. Pointed body तब कहे pear shaped. This is, suppose this is a pointed body. This is a pear shaped. हला it is a pear shaped. मुनिया वस्तु हला तेबे से कहि छी आर सरफेस चार्ज डेंसिटी को जगह रे अधिका तले एई जगह रे सरफेस चार्ज डेंसिटी. This is more than part. हला तल दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मोर. हला तल एई जगह रे सरफेस चार्ज डेंसिटी अधिक हबो देन द अदर सरफेस अपेक्षा. फ्लैट सरफेस अपेक्षा पॉइंटेड सरफेस रे कोन हबो तमर अधिक चार्ज स्टोर बा रहिबे. तेणु एटा कहला गला द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नियर कोट एट द पॉइंटेड सरफेस एंड दिस इज द फिगर. So where the surface charge density is more at the point. In a pear-shaped body, show it diagrammatically. Clear? तो ये थिला हमारा surface charge density. एबे हम देखिवा next volume charge density. Next है volume charge density. तो what is the volume charge density? Volume charge density. What do you mean by volume charge density? Sorry, volume charge distribution. Volume charge distribution. What is the volume charge distribution? Clear? So volume charge distribution का कहवा सेमती charges are distributed by in volume charge distribution. The charges are distributed in the volume of a block. In volume charge distribution, in volume charge distribution, the charges are distributed. The charges are distributed. The charges are distributed. कोठी
in the volume of a block, in the volume of a block. What do you mean by block? In the volume of a block. Block means this is a block. It is a block because it has length, it has breadth, and it has a thickness. This is a block. This is not a wire, and this is not a surface but sheet. एटा गोटे वायर कहि परिबानी, एटा गोटे सीट कहि परिबा नाही, एटा कोन कहमे गोटे ब्लॉक, वुडन ब्लॉक हैला। ताले से कहै छै in volume charge distribution, the charges are distributed in the volume of a block. Suppose this is a block, this is a block हैला। Those have it has length, breadth and thickness, ताले it is a volume। ताले ए वॉल्यूम रे जो चार्ज टा रहिला ताको हमें कोन कहबा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोली कहबा। क्लियर? ताले देखिबा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट हला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यस, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हला। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, the charge per unit volume is called volume charge density. So it is the कौन कहबा, it is the charge distributed, it is the charge distributed, it is the charge distributed per unit volume, per unit volume of a block, per unit volume of a block. So this is known as the volume charge density. Clear? Hala? So it is the charge distributed per unit volume of a block. It is denoted by कौन होगा ना, rho. This is the symbol of rho. It is denoted by rho. The volume charge distribution है, so volume charge density है rho. Clear? तो next class रे देखिबा हलाटी। तो what is the volume charge density in case of a uniform charge distribution and in case of a non uniform charge distribution? Uniform charge distribution थिले कौन होबो, non uniform पड़ेगा तो लेफ्ट पड़े। नेक्स्ट वाला नले देखि दछे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तले कोन होबो, यस, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इफ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इफ q with the charge distributed already in the volume V of a block hala। talate what do you mean by rho? That is equal to total charge divided by volume. Then we can find out the total charge hala charge per unit volume into volume of the body. Clear? Then आमे देखिबा non uniform charge distribution, for non uniform charge distribution, for non uniform charge distribution, for non uniform distribution. सेमती non uniform distribution कौन करिबा? Now we consider an elementary volume. एठी गोटे छोटा वॉल्यूम टा नेली, छोटा वॉल्यूम नहीं कि छोटा वॉल्यूम टा नेली ताले माने करा if dq with the charge distributed, if dq with the charge distributed in
an elementary volume, in elementary volume dV, elementary volume कहते हैं dV, this is the small element that I love dV। তাহলে কোন হবে এটি, তাহলে rho is equal to dq by dV, clear? তো rho is equal to dq by dV। then what is the total charge, তাহলে total charge কত হবে, তাহলে dq is equal to rho dV, তাহলে total charge হলো integration of dq integration of rho dV 0 to v, or this can be written as v rho dV, आगो का जे वॉल्यूम इंटीग्रेशन, that means 0 to v है ना। তাহলে টোটাল চার্জ হয়ে গেল कहते हैं টোটাল চার্জ, তাহলে q is equal to वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ rho dV, आगो का जे वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, क्लियर? The next, units and dimension. So what is the units and dimension? Similarly, we can find out the units and dimension. Unit, है ना, rho is equal to कहते कहले q by v और dq by dv। तले in SI, yes, what is rho? तले कहते हैं unit coulomb by meter cube। then dimension तले rho dimension is equal to q by v dimension, है ना। तले कहते हैं क्या, q है कहते हैं it, तले it by v, है ना, I है a t by l cube। तले we can write m नहीं, तले m0 yes m0 l minus 3 t1 a1, this is the dimension, है ना। this is the dimensional units and dimension of a rho। तले ये है हमारा the different ways the charges are distributed, clear? then we'll see in the next class। thank you to all।